अस्सलाम वालेकुम everybody. I hope आप सब खैर खैरियत से होंगे and I hope that you have all taken my first session that we had shared yesterday with you. Hopefully a lot of things were cleared and definitely introduction था regulatory affairs से related. So I would want you all to share your experience, to share what you've learned and what are your questions, what are your queries with respect to the lesson and the session that we have shared with you yesterday. So the chat box is open. Please write your questions that you have with respect to the session that you've taken yesterday. And once we are through with that, we'll be sharing with you a quiz in the coming week so that you can attend that quiz and we can see how much you've learned from the sessions that we're taking. All right, so Samar Iqbal has a question. Can you please differentiate between regulatory affairs and medical affairs department? All right, Janab. जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था कि रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट बेसिकली करता क्या है, व्हाट आर देयर टास्क and what are their roles and responsibilities with respect to a regulatory affairs professional. Medical affairs department is a slight different from regulatory affairs department because medical affairs department does not create a liaison between the regulatory authorities and the company. So basically medical affairs department का जो role है वो इस तरीके से है कि वो basically training and development का काम करते हैं of the medical professionals with respect to the product, with respect to the disease, and with respect to the brands that they're about to launch or their product is already available in the market. So medical affairs in Pakistan, जो technical grounds के ऊपर जो उनका basically जो काम है उनका basically वो ये है कि they train the salespeople, the medical professionals, which includes doctors, nurses, pharmacists, with respect to the disease, with respect to the products that that the company is proposing, along with creating the medical literature and text that is being provided along with the product. So basically, medical affairs का जो एक्चुअल रोल है वो ये है, वेयर एज रेगुलेटरी अफेयर्स का जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको कि रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का रोल है टू क्रिएट अ लाइजन बिटवीन द रेगुलेटरी बॉडी which is Drug Regulatory Authority of Pakistan in Pakistan and with the respective company of the industry. I hope my answer is clear to you, Shawan. Now, all right, so Laiba Khalid had a question, what is CTD? All right, so briefly, already मैं आप लोगों को last lecture में explain कर चुकी हूँ. CTD is basically common technical document. ठीक है जी, common technical document basically ये वो document है जो कि किसी भी registration process के लिए बहुत ज़्यादा crucial और important है. ठीक है जी, सीटीडी को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. वी विल स्टडी सीटीडी मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट इन आवर एडवांस्ड लेवल कोर्स, जिसमें मैं आपको इंटायर सीटीडी डोजियर्स बनाना सिखाऊंगी. एंड यू विल लर्न what is the importance of CTD, which I've already explained a bit in my first session as well. In the coming sessions, I'll be explaining you a bit more about CTD, but entirely we'll be discussing the entire CTD dossiers in our advanced level course. जिसके अंदर मैं आपको from tip to toe, I'll be teaching you how do we make a CTD dossier. All right, there's another question. If any company or any department is not complying to the guidelines, is the regulatory affairs professional held responsible by DRAB? Very interesting question. A question that comes to our mind with respect to being a regulatory professional, because we are the primary liaison between the company and the regulatory authority. So basically, the question here says कि क्या हमारी responsibility होगी अगर company comply नहीं कर रही है? So please take a long breath, because no, we shall not be accountable for any of these mishaps or non-compliance, because regulatory affairs basically delivers the information and they try for the company to comply for the same.
So regulatory affairs department is like a supporting department for the crucial departments, the critical departments that we've already discussed in the session, last session, that quality assurance, quality control, and production departments are solely reliable on for all of the compliance in the plant, in the manufacturing processes. If there are any changes, if there are any non-compliance happening on the floor, in the plant, during production, during quality control, regulatory affairs professional is only liable to communicate that this is the wrong practice, this you are non-complying, and these are the right guidelines. And even after that, if the company or if the production department, if the quality department does not adhere to these compliances, draft in particular labels these departments. These are the departments that are responsible to answer, not regulatory affairs department. So quality assurance में से आपका जो quality control in charge होता है और production में से आपका production in charge जो होता है, these are the two most critical people who are held responsible if there are any non-compliance on the plant, not the regulatory affairs department. All right, there's another question. YouTube sessions are accessible throughout the course. Unfortunately, the sessions that we'll be sharing with you for the weeks will only be available with you till the end of the session, till the end of the week's course. इसीलिए this is one of the reasons that we have opened this portal, so that जो भी ambiguity, जो भी questions हैं with respect to the session, आप हमसे then and there इधर ही इसी forum के ऊपर हमसे आप you can ask us और हम accordingly आपको जवाब देंगे, and whatever the contents or whatever the literature that you require from us to study further, we'll be more than happy to share that with you as well. But these lessons, these lectures will only be available by the end of this week's 3 weeks course. All right, there's another question that says how BD works in relation with the regulatory affairs department. All right, so BD is basically business development department. जिस तरीके से मैंने आप लोगों को explain किया था in my first session that regulatory, BD, medical affairs is like a triangle, ठीक है? So इस triangle को अगर आप देखें तो ये तीनों joints है, they're basically conjoined together. So top pay, you'll see regulatory affairs department, then you'll see medical affairs department, and the end you'll see business development department. So ये तीन ऐसे departments हैं जो कि correlate करते हैं you what this department does. So this at the time of launch, at the time of selling, at the time of marketing the product, the business development department makes sure कि जो भी product हम market में लेकर आते हैं, it links with the current portfolio and it helps in creating a better pipeline for the product. So अब ये प्रोडक्ट मार्केट में कैसे आएगा? ये प्रोडक्ट मार्केट में तब आएगा जब रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट कंफर्म करेगा कि क्या हम इस प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, तो क्या रीजन होगा, करवा सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा, what is the process, what is the procedure, what are the requirements that we have to fulfill in order to bring a particular product. So basically BD and regulatory affairs department conjointly work together to bring a new product to the market. Moise को सवाल है, how do regulatory affairs professionals stay updated with changing regulations? Very good question, Moise. I appreciate such kind of questions because unfortunately
at right now जो एक सिनारियो है with respect to regulatory professionals, especially the youngsters, आप लोग जो हैं जब आप लोग इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, स्पेशली रेगुलेटरी अफेयर्स को ज्वाइन करेंगे, तो आप किस तरीके से अपडेट रह सकते हैं? सो मैं आप लोगों को आज ही आई वुड सजेस्ट टू गो एंड सर्च फॉर dra.gov.pk. लेट मी राइट दिस वेबसाइट फॉर यू एज वेल, www.dra.gov.pk. आप इस वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाकर complete details and updates with respect to Drug Regulatory Authority of Pakistan. What is happening? What are the current scenarios? क्या नई गाइडलाइंस आई हैं? क्या नया टॉपिक है? कौन से प्रोडक्ट को रिकॉल किया गया है? रिकॉल क्या होता है हम ये आपको आगे आने वाले सेशंस में बताएंगे। किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है? फार्माकोविजिलेंस क्या काम कर रहा है? ड्रग रेगुलेटरी ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड्स क्या कर रहे हैं? लाइसेंसिंग क्या कर रहा है? Each and every information is present on this website. DRAP is making sure, and they're working tirelessly in order to make their website up to date. If you ask me, when I started working in regulatory affairs, उस वक्त की वेबसाइट में और आज की वेबसाइट में जमीन आसमान का फर्क है, because a lot of information has been added for the convenience of the industry. A lot of information has been updated, a lot of guidelines, a lot of SROs and helping material has been added to this website, especially for the newcomers who have recently joined regulatory affairs. आपको सारी guidelines, आपको सारे rules, आपको सारे laws इस website के ऊपर मिल सकते हैं. All right. Samar Iqbal has a question. How can we access the jobs of DRAP? All right. If you're asking me with respect to DRAP jobs, so DRAP basically is a government body. DRAP may basically there are certain requirements that you have to meet before applying for any job in DRAP. So the basic requirement is to get your registration as a pharmacist in Pharmacy Council. फार्मेसी अगर आपने कराची से किया है तो आप कराची की फार्मेसी काउंसिल से कीजिए, सिंध की फार्मेसी काउंसिल से लीजिए। अगर आपने पंजाब में कहीं से कहीं पे किया है तो आप पंजाब की फार्मेसी काउंसिल से लीजिए। इसी तरीके से सो ऑन सो फोर्थ, हर प्रोविंस की अपनी फार्मेसी काउंसिल है जहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रैप इज दैट कि आप जो है वो यू कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, जिसको हम in simpler words people call it licensing, which is a bit different from what license is. License is different, लेकिन ये as a pharmacist आपकी registration होती है, जिसके बाद आप अपने नाम के साथ RPH लगा रहे होते हैं। So वो basically आपकी registration हो रही होती है as a pharmacist in Pakistan. So आपके पास register A के नाम से आपको registration form A के नाम से आपकी वो registration होती है। And after that, with respect to whatever the department that DRAP has to offer a job in, बेसिकली आपकी वो जॉब ऑफर जो है वो उसी वेबसाइट के थ्रू कटिंग ऑन न्यूज़पेपर्स दे विल टेल यू कि ये हमारी जॉब है जो ओपन है, एंड टाइम टू टाइम वो अपनी जॉब्स शेयर कर रहे होते हैं। ड्रैप की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर्स में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको थ्रू ड्रैप अवेलेबल होती है, एंड इफ यू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ ड्रैप, whatever the requirements they have, फिर उसके बाद वो आपसे टेस्ट लेते हैं। there is a series of interviews, and if you fulfill the criteria, if you're right for the job, they definitely take people on board. All right. So Anam, your question is, I want to ask about the SRO roles. Suppose draft makes any change in guidelines, does SRO provide a bridge between pharma company? All right, so let me just rephrase your question, and I think I know what you're asking here. So जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपने सेशन में बताया था कि SRO होता क्या है, SRO is basically an amendment or an additional information or a new information that is added to the already existing information. So, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पास पहले ड्रग एक्ट होता था 1976, जो कि आज भी चलता आ रहा है। इस ड्रग एक्ट के अंदर with time there have been a lot of changes, there have been a lot of additions, there have been a lot of amendments. Definitely with changing times, regulations में modifications आती रहती हैं, आपके पास rules change होते रहते हैं। We have to modify with respect to the changing times, with respect to the changing diseases,
विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत होती है। तो जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रिवाइज हो रहे होते हैं, इसी तरीके से ड्राफ्ट थ्रू एसआरओज, गेजेटेड एसआरओज, they bring these changes, they bring new additions, they bring new information to the company, to the companies, to the industry. So basically SRO is not a bridge between the company and draft, but it is basically a new information that is being introduced into the industry in order for us to follow. So SRO is basically a draft document जो कि once it is signed and gazetted, इसका मतलब ये है कि अब इंडस्ट्री लायबल है इसको फॉलो करने के लिए। Like this is the information that we have to follow. It is mandatory कि हम उसको comply करें, and any change that is brought about, any addition that is brought about with SROs through SROs has to be compliant. So basically SRO का जो role है वो ये है, and Anand, the question that you're asking right now, it's a bit different. SRO does not create any bridge between draft and the company. Draft basically provides an information, a set of information, or rule or change or addition to the existing information जो कि companies को adhere करनी होती है, comply करनी होती है. I hope I've answered your question. So Hafsa Rais is asking us, is it possible for you to give us assignment with respect to to making particular modules of dossier? This would really help. All right, Hafsa. So as I've already said that हम बहुत detail में बच्चे will be studying CTD dossiers. मैं आपको बताऊंगी क्या problems आ सकते हैं, possible किस तरीके से आप उनको counter कर सकते हैं, क्या issues आ सकते हैं आपको with respect to CTD dossiers. क्योंकि CTD dossiers ना अब it's part of a regulatory profession, ठीक है। आपने बनाना है CTD dossier, and especially क्योंकि आप लोग young pharmacist हो, अब आप लोग join करोगे इंडस्ट्री को, so you should know what CTD is and क्या क्या situations, क्या क्या hurdles, क्या क्या queries आपको draft की तरफ से आ सकती हैं with respect to CTD. So I will be offering you a detailed explanation on CTD in our advanced level course. Because right now हम इस वक्त थोड़ा सा introductory phase में हैं, so for students who do not have a clear picture of regulatory affairs itself, I would appreciate if they come forward first and ask me what is regulatory affairs, what is medical affairs, business development. आप पहले इंडस्ट्री से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी क्लैरिटी लें, सो दैट आपको पता हो कि व्हाट यू आर डाइविंग इनटू, और क्या आप what you should be expecting, what is the company expecting out of you as a regulatory professional, as a medical professional, as a business development professional. तो वो किस तरीके से क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, एंड आफ्टर दैट वंस वी मूव टुवर्ड्स द एडवांस लेवल तो हम सीटीडी को बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल वाइज मैं आपको इनफैक्ट एक्सप्लेन करूंगी कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 किस तरीके से बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जिस तरीके से हमारे सेशंस आगे आगे गुजरते जाएंगे, आप समझेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सीटीडी के हमारे लिए इसको समझना कितना जरूरी है। Alright, Hafsa, I hope I've answered your question. Sundar Suhail ka question है, what is the starting salary package of regulatory pharmacist? Alright, so Sundar, it depends basically as a new joinee in the industry. बच्चे मैं हमेशा अपने जूनियर्स को भी अपने साथ जिन बच्चों ने मेरे साथ काम किया है, जो बच्चे मेरे पास गाइडेंस के लिए आते हैं, मैं उनको एक बात कहती हूँ कि बेटा once you start working now, the first thing that should come into your mind is how much you're learning, ठीक है? Because salary, packages, benefits, perks and benefits तब आते हैं जब आप कंपनी को कुछ ऑफर करते हो, ठीक है? सो बेसिकली आप मार्केट में जाते हो, आपके पास एक लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट है, एक इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट है। अब इंटरनेशनल ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अच्छी उसकी से है, ब्रांड वैल्यू है मार्केट के अंदर, वेराज एक लोकल ब्रांड है, किसी को पता नहीं है उसके बारे में। अब जो लोकल ब्रांड है, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो उसको लोग इवन दो कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, सब चीजें अच्छी हैं, बट क्योंकि लोग उसको जानते नहीं है, लोगों को उस प्रोडक्ट का पता नहीं है, तो वो कम में ऑफर कर रहे होते हैं।
Whereas a renowned brand, an international brand और renowned brand जिसकी एक अच्छी मार्केट है, ब्रांड वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि लोगों का उस पर भरोसा ज्यादा है क्योंकि उसने परफॉर्म करके दिया है आपको। सो इसीलिए फिर वो जो प्रोडक्ट आपके पास मार्केट में ब्रांड अवेलेबल होता है वो हायर प्राइस पे होता है। सेम सिचुएशन हम पर होती है एज अ प्रोफेशनल। अब वो रेगुलेटरी प्रोफेशनल हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन हो, R&D हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये तब आपको सोचने की जरूरत होती है कि आप व्हाट सैलरी पैकेजेस कैन दे ऑफर, व्हाट शुड बी द सैलरी पैकेज। ये आप तब डिफाइन करते हो अपने लिए जब आपके पास इतनी नॉलेज होती है दैट यू रियलाइज कि यस, नाउ आई हैव समथिंग टू ऑफर टू द कंपनी एंड इन टर्न आई शुड एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ देम। सो राइट नाउ इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि चंदा, यू गाइज आर ऑन एन इनिशियल लेवल। आप इनिशियल लेवल पे हो, इनिशियली काम करना शुरू कर रहे हो, अभी तो आपका लर्निंग फेज है। इस वक्त तो मैं कहती हूँ कि फ्री में भी आपसे काम करवाए ना तो प्लीज कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वक्त काम करना जरूरी है, लर्न करना जरूरी है, रादर देन कि आप अर्न क्या करें। आई नो सिचुएशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पाकिस्तान की सिचुएशंस, करंट इकोनॉमिकल सिचुएशंस हमारी थोड़ी सी अनफेवरेबल, बट ये सब चीजें विद टाइम जब आती है ना, दे ब्रिंग यू मोर सेटिस्फैक्शन, they bring better rewards, they bring bigger rewards for you once you have learned, you have gone through the whole process, and you have something to offer to the industry, to the company. ठीक है ना? सो अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो लोग आपको उसी के हिसाब से आपको जो है ना वो आपका सैलरी पैकेज भी डिसाइड करेंगे, आपको वर्क्स एंड बेनिफिट्स भी ऑफर करेंगे। सो दिस इज द इंटायर इंडस्ट्री फिनोमेना दैट आई पुट फॉरवर्ड in front of you. All right. There's another question that Hafsa has asked. Are CMC professions and regulated professions the same? All right. CMC basically है क्या? बहुत ही बड़ी ambiguity है with respect to students जब उनको ये पता चलता है कि CMC क्या है और रेगुलेटरी क्या है। सो पहले तो हमारी CMC के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि CMC है क्या। Again, Hafsa, I will take this question and I'll park this question for now because जो बाकी के हमारे listeners हैं, they are very fresh graduates and उनकी जो understanding है with respect to CMC भी नहीं है, let alone उनको शायद इसकी abbreviation भी नहीं पता होगी। So let me just take these things one by one, step by step मैं इन चीजों को लेके चलूंगी so that आपकी understanding with respect to CMC, with respect to CTD, with respect to DMF, with respect to COPP, with respect to all the other documents that are required, all the other information that is required in order to be a regulatory professional. So regulatory professional is like an umbrella. ठीक है, इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आउट ऑफ विच वन ऑफ द डिविजन्स दैट इज इट्स CMC। ठीक है, तो CMC है क्या, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू इन डिटेल once we talk about CTD and once we talk about once we move forward with our other sessions. So Laiba Khalid has a question. Does DRAP also set guidelines for testing like QC or audit in QA? How DRAP and USP-BP are linked? All right. So DRAP, yes. हम जो हमारा जो वीक 2 का सेशन है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ड्रैप के गाइडलाइंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिंग, विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, कौन कौन से गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, क्योंकि whatever that is happening in the pharmaceutical company, even marketing and advertising, वो ड्रैप ने उसके रूल सेट किए हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये क्वेश्चन दैट the last question that was asked by Ms. Laiba was that क्या QC और audit से related जो guidelines है, 100% there are guidelines, there are rules and regulations for inspection, for quality, for QA, QC, production, इसकी गाइडलाइंस मौजूद हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस। सो मैं हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम टू यू। ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, कौन कौन से एक्ट्स एंड रूल्स होते हैं जो कि हमें कंप्लाई करने होते हैं।
Second question जो लाइव का था with respect to pharmacopoeias, USP pharmacopoeia, United States pharmacopoeia, and British pharmacopoeia. This is an entire topic again. ये वो basically formats हैं जो कि हम use करते हैं in order for our products to comply to international standards. So pharmacopoeia is basically the every SRA country, stringent regulatory authority countries, जो कि हम further detail में discuss करेंगे in our next session, have their own standards. और उन standards को meet करते हैं हम तब जब हम उन्हीं के particular generics को अपने पास develop कर रहे होते हैं. So there are a lot of products that are present in these pharmacopoeias. So in order to meet those standards, we follow such parameters to produce quality, safety, and efficacious drugs with respect to such pharmacopoeias that are either USP, United States Pharmacopoeia, BP, British Pharmacopoeia, EP, European Pharmacopoeia, JP, Japanese Pharmacopoeia, so on and so forth. Okay, all right. Moving on, another question that we have is from Mavish Hamid. Hamid has a question. What are the basic guidelines we should know as starting regulatory professionals? So Mavish, अगर आपने sessions thoroughly मुझसे ले लिए, especially these first 3 weeks, अगर आपने अच्छे से understand कर लिया, I am 100% sure you will be ready to give any interview, any introductory interview, any first interview as a beginner for regulatory affairs professional very easily. So अगर आप ये sessions लग कर अच्छे से समझ कर आप follow करके समझते हैं, सीखते हैं यहाँ से regulatory affairs से related, मैं आपको I can tell you for sure कि आप कोई भी interview with respect to regulatory affairs बहुत आराम से दे सकते हैं. All right, last question from Navera Noman is are the ICH guidelines also used? Are the ICH guidelines also used in RN Pakistan? Should we know about? Oh yes, very nice question, Navera. इसके लिए आपको मेरा next session लेने की जरूरत है. Next session मेरा entirely 50% in fact session मेरा जो है वो जो chapter है वो ICH guidelines के ऊपर है. So please stay tuned with the next session that I'll be providing, जिसके अंदर ICH guidelines में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. ICH guidelines हैं क्या, हमें फॉलो करने की क्यों जरूरत है, and which part of ICH guideline is being followed in Pakistan, वो मैं आपको in detail अपने next session में बताऊंगी. So नवेरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह next Saturday next session में जो है वो ICH guideline को मैं बहुत अच्छे से explain करूंगी. All right, I guess that's it with the questions. Inshallah, I'll be joining you again with a live session for week 2. And our next session is divided into 2 parts. First part, जैसे मैंने आपको बताया है, I'll be explaining to you that what is regulatory affairs, what is international pharmaceutical laws, how are international pharmaceutical laws important for us to follow, and what is ICH guidelines. So first part में हम उसको cover करेंगे. Second part में मैं आपको explain करूंगी export regulatory को, international pharmaceutical laws किस तरीके से follow होते हैं, and what are the registration procedures with respect to exporting your product in different markets. So exporting, importing से related हमारा जो second week का session होगा, it will be divided into 2 parts again, I'm telling you. First part would be consisting of the introduction of pharmaceutical laws with respect to local and international regulatory. And then in the second part, I'll be explaining to you that aapne kis tarike se, what are the registration procedures, what are the registration processes that are being followed internationally, and how can you export your product and how can you import your product, what are the requirements, marketing authorization kya hoti hai, documents requirements kya hoti hai, जनरल टाइमलाइंस क्या होती हैं कि आपको डिफरेंट कंट्रीज में जनरल टाइमलाइंस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस. सो वो सारी मैं आपके पास वीक 2 के पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. So I hope till now everything is clear. If there is any other thing that you want to ask with respect to this session,
you may forward your questions on the WhatsApp group, which will be open for you to write your questions, and definitely I will be responding your requests, will responding to your questions with the coming weeks. All right. Thank you so much, everybody. जो हमारा फर्स्ट सेशन है, आई होप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे अब, and we will be floating a quiz with respect to the first week, so that we can test you कि either you are learning something out of it or not. So thank you so much for your time, and hopefully inshallah we'll be joining again in the next week with you and discuss more about regulatory affairs. Thank you so much, and Allah Hafiz.